Good morning and Assalamu alaikum. Today we will start with the third chapter of economics, that is part B. That is the extension of demand analysis chapter, that is elasticity of demand. For in this chapter, if you have any doubt regarding anything, you can contact me on my detail. I had mentioned you detail on first slide of my PPT, so you can contact me directly from there. Okay. Now, what do you understand by elasticity of demand? See, every time it is not necessary कि कभी कभी हम कैसा बोलते हैं कि if suppose अगर प्राइस अगर स्लैश डाउन हो गई बाय 50% तो डिमांड भी बोले उसका इंक्रीज हो जाएगा 50%. इट नॉट नेसेसरी. इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी कि इफ सपोज अगर प्राइस अगर डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंगली हाउ द डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ मच परसेंटेज इज डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग, दैट वी हैव टू सी in this chapter. That is the meaning of elasticity of demand. Now, elasticity of demand and the price elasticity of demand is nothing one and the same. Okay, sometimes in the examination you will get a question like this: what is the elasticity of demand, and explain the types of elasticity of demand. And second question is like that: what is the price elasticity of demand and what are the types of price elasticity of demand. In these two types of question, the student are getting confused because the answer for both the questions are different. Elasticity of demand and types of elasticity of demand, this part is different. And what is the meaning of price elasticity of demand, and explain the types of elasticity of demand. This thing we will see in the chapter. First we will take with the elasticity of demand. What do you understand by elasticity of demand? That means the responsiveness of demand to the change in its goods own price. That is how much the demand is responding, when the price is getting changed. If suppose अगर price अगर मेरा change हो गया 10% से, प्राइस अगर डिक्रीज हो गया है 10% से, तो मे बी उसका डिमांड बढ़ जाएगा 20% से, मे बी 30% से, मे बी 5% से, या मे बी 90% से. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी divided by percentage change in its price. Okay, this is the actual meaning of elasticity of demand. See here, if you'll see here that in the next diagram I had mentioned you the formula, that is the percentage elasticity of demand is equal to percentage change in the quantity demanded to the percentage change in its price. Okay, this is percentage. This triangle is the meaning. Triangle indicates that is change in the quantity demanded to the change in its price. So in this chapter we have to see accordingly how much demand is responding to the change in its price. Here I had shown you that types of elasticity of demand. See, there are 4 types of elasticity of demand. Now also I am telling elasticity or types of elasticity of demand and the types of price elasticity of demand, the answers are different. Don't be confused in the paper if you will get the question like this. In types of elasticity of demand, there are 4 types of elasticity of demand. Number 1 is the price elasticity of demand. Second is the income elasticity of demand. Third is the cross elasticity of demand. And fourth is the advertising or promotion elasticity of demand. First I will take the price elasticity of demand. Price elasticity of demand is same like a elasticity of demand. That is price elasticity of demand. See in this here, price elasticity of demand is equal to percentage change in the quantity demanded to the percentage change in its price. This is the meaning of actual price elasticity of demand. This one. Okay. Another, now this elasticity of demand can be elastic demand or can be inelastic demand. Elastic demand means what? If suppose price changes, increase or decrease, the demand will be accordingly responded. But in inelastic demand, if the price changes, the demand will not be affected. Okay, this I will explain you ahead. There is the one part about this. Second is the income elasticity of demand. See, in income elasticity of demand, percentage change in the quantity demanded. See, percentage change in the quantity demanded to the percentage change in its income. Income is indicated by Y.
income is indicated by y. Here in this income elasticity of demand, कि अगर समझो हमारा income increase हो गया या decrease हो गया तो accordingly मेरा कितना demand increase होता है या decrease होता है, how with how much percentage the income increases or decreases. See here they had mentioned the quantities of commodity or services which ensures customer will buy at a different level of income. Other things remain constant. Okay, it expresses the relationship between income and demand. So this is the second types of elasticity of demand. Third, we have a cross elasticity of demand. In cross elasticity of demand, we are taking as a two commodities over here. Two commodities means substitute goods like commodity A and commodity B, like tea and coffee. If suppose agar in cross elasticity of demand, percentage change in the quantity, percentage change in the quantity of commodity A, percentage change in the percentage change in the quantity of a commodity A to the percentage change in the price of commodity B. In this type of elasticity of demand, कि अगर if suppose अगर चाय के प्राइस अगर बढ़ गए तो डिमांड किसका बढ़ जाएगा? कॉफी का. That means और सेम लाइक इन अपोजिटली वाइस वर्सा. इफ सपोज अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा. That is the meaning of cross elasticity of demand. And the last one is the advertising elasticity of demand. In advertising elasticity of demand, percentage change in the quantity demanded to the percentage change in advertising strategies. That is, if we will do more and more advertising strategies, the demand will also accordingly affected. And if you will do less advertisement in the market, the demand will also be less in the market. See here, I had mentioned you the formula for this in this picture, that is advertising elasticity of demand. AED means advertising elasticity of demand, that is proportionate change in the quantity demanded to the proportionate change in the advertising expenses. Okay, any doubt regarding this chapter, you can contact me on any doubt regarding this slide, you can contact me on my mobile phone or on my email ID. Nextly, see this. There is another topic, that is this is the most important topic, that is the types of price elasticity of demand. Now this price elasticity of demand means what? Percentage change in the quantity demanded to the percentage change in its प्राइस. मैंने देखो पहले बोला था कि अगर इनकेस अगर प्राइस अगर नीचे 10% से गिर गए या 10% से बढ़ गए या 20% से गिर गए या 20% से बढ़ गए तो डिमांड विल बी अफेक्टेड अकॉर्डिंगली. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 10% से प्राइस गिर गए तो 10% से ही उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. नो, नॉट लाइक दैट. इन दिस टाइप्स वी हैव टू सी कि हाउ the demand is getting affected by the changing in its price. Now this price elasticity of demand is divided into 5 types. First is a perfectly elastic demand. If suppose here, see here in this one, first type is this one. I will highlight with the highlighter. Okay, so this is a perfectly elastic demand. Okay, in this, see, on a y-axis we had taken the quantity demanded, on an x-axis we had taken a price. Here the price is not getting changed but the demand is increasing infinitely. These kind of things we are only found in the theoretical only. We can't see these things in the practical. Second type, perfectly inelastic demand. We can't find an example for this also for first type perfectly elastic because it is a theoretical part. We can't see these things in the practical part. So secondly, it is a perfectly inelastic demand. See the price, if the price increases, see price are going up or the price are getting coming down, the demand will not be affected. See this line, the demand will not be affected. So that's why price elasticity of demand is equal to 0. This kind of example if you will see in salt, then addicted product like alcohol, cigarette,
इसके अगर प्राइस बढ़ जाओ या डिक्रीज हो जाओ, द डिमांड विल नॉट बी अफेक्टेड। लोगों को परचेस करना है मतलब करना ही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, nextly you are having a unitary elastic demand. In unitary elastic demand, that if the price will increase by 20%, the demand will also increase by 20%. That's why it is called as a price elasticity of demand is equal to 1. Nextly, relative elastic demand. See here, my price is getting up by 25%. How much? 25%. But my price is getting down. My price is getting down by 25%, and my demand is increased by 75%. See here, I had highlighted by the pointer. So they had moved by this 75%. That's why my price elasticity of demand is greater than 1. This kind of example, if you will see, like the luxurious product like refrigerator, TV, LED TV, washing machine, this kind of example we can see in this relative elastic demand. And the last one is the relative inelastic demand. If the price slashed down by 75%, the demand will be increases by only 25%. In this type, relative inelastic demand. In this we can found example like necessity products like wheat, sugar, rice. Why we in this type we are finding the example like wheat, शुगर, राइस एक्सेट्रा. तो क्यों हमें रिलेटिव इनइलास्टिक में अगर इसका प्राइस अगर 75% से नीचे गिर गया तो इसका डिमांड ओनली इंक्रीज बाय 25%, क्योंकि जितनी हमको जरूरत है हम उतना ही परचेस करेंगे, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वो जल्दी खराब हो जाते हैं ज्यादा टाइम रखने से. तो इट्स बेटर कि हमको जितनी जरूरत है हम लोग उतना ही मंगा लेते हैं इसमें. दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर syllabus. Nextly, this one is the last topic of this chapter, that is a factor affecting the price elasticity of demand. First is the nature of commodity. See here, and here I had mentioned in the nature of commodity. Here I had mentioned in the nature of commodity. Yeah, that is I highlighted by the yellow point. That is necessity. First they had mentioned the necessity product, right? This one. In necessity product are less elastic in demand. Why? Because it is a perishable in nature. लोग उसको जल्दी से परचेस करते हैं और जल्दी से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ लेस इलास्टिक डिमांड. तो उसका जो हमको जो नेसेसिटी रहती है उतनी हम लोग, चाहे उसका प्राइस कितना भी नीचे गिर जाओ, हमको जितना जरूरत है हम उतना ही परचेस करते हैं. नेक्स्टली दे हैड मेंशन अ कंफर्ट प्रोडक्ट. कंफर्ट प्रोडक्ट आर इलास्टिक इन डिमांड. व्हाई इट इज अ इलास्टिक इन डिमांड? बिकॉज देखो हम उसको एक बार अगर परचेस करते हैं तो इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो दे आर यूजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई अगर उसका प्राइस अगर ज्यादा नीचे गिर जाते हैं तो उसका परचेसिंग भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज है. एंड द थर्ड टाइप इज लग्जरियस प्रोडक्ट. दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर बिकॉज दे मोस्टली दीज प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द लग्जरियस प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर. सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. इफ सपोज अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट की अगर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो उसका डिमांड भी कैसा होगा? इलास्टिक डिमांड होगा. क्योंकि कैसा मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल सब्स्टिट्यूट और एक प्रोडक्ट अगर जिसके देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो विल हैव अ लेस इन इलास्टिक डिमांड. क्यों? क्योंकि हमको वो परचेस करना है, मतलब वही करना है, क्योंकि वी डोंट हैव अवेलेबल ऑप्शन इन द मार्केट. एंड इन दैट फर्स्ट केस वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट एंड वी कैन परचेस एनीथिंग. दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर इलास्टिक इन नेचर. Next is the number of users. If suppose any product is there which is used for more than one users, so the demand for that product is elastic in nature. And अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका एक से ज्यादा यूज नहीं है तो दैट डिमांड विल बी इनइलास्टिक इन नेचर. मतलब हमको वो यूज करना है, मतलब वही यूज करना है, और नंबर ऑफ यूजेज है तो हम उसको कई चीजों के लिए यूज करते हैं. लाइक उसका अगर एग्जांपल मैं दूंगा तो उसके एग्जांपल अभी हमारे पास है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, विच वी कैन बी यूज फॉर द मोर देन वन पर्पज. ओके. सेकेंड, proportion of total expenditure spent on the product. If suppose अगर कोई प्रोडक्ट के लिए अगर हम ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका भी डिमांड हमारा मार्केट में इलास्टिक होगा. और अगर इनकेस अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अगर हम लोग एक्सपेंडिचर
कम करते हो, टोटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कम करते हो, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट विल बी इलास्टिक। लाइक मैंने तुम लोग को लास्ट में एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बोला कि जितना ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ज्यादा हमारा मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट इज अ level of income of a consumer. If suppose अगर level of income of a consumer is higher, the demand for the product will also be elastic. उसके लिए कैसा पैसों की कमी नहीं रहेगी, वो जो चाहिए वो प्राइस में परचेस कर सकता है। बट अगर कोई पुअर है जिसका लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लेस, तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, क्योंकि उसको जो है वो मार्केट में परचेस करना है, मतलब करना, और उसके पास पैसे की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना वो परचेस कर सकता है। नेक्स्टली इज द हैबिट इन हैबिचुअल प्रोडक्ट, लाइक किसी चीज की आदत रहती है, एडिक्टेड रहते हैं, लाइक सिगरेट पीने की किसको आदत रहती है, अल्कोहल कंज्यूम करने की किसको आदत रहती है, तो उसमें अगर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, द डिमांड विल नॉट बी अफेक्टेड। दैट्स व्हाई उसका जो डिमांड रहेगा दैट इज इन इलास्टिक इन नेचर। एंड द लास्ट वन इज द टाइम पीरियड। सी during a short period most of the commodities are having a less elastic of the डिमांड। लाइक अगर हम पेरिशेबल प्रोडक्ट का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि जैसे वेजिटेबल हो, फिर तुम्हारे फ्रूट्स हो, तो दे आर लेस लास्टिंग इन नेचर। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए हम इसको स्टोर नहीं करके रख सकते। एक बार ले लिए, परचेस कर लिए, उसको जल्द से जल्द हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स व्हाई short period commodity they are less elastic in nature, and second one is the long period. If any commodity, if you are purchasing for a long period of time, that is durable in nature, so the demand for that product will be elastic in nature. So the demand for the product long durable products are elastic in nature. See here they had mentioned in that point here they had mentioned all, where I had highlighted with the yellow pointer. Okay, they had mentioned here. If any doubt you are having regarding this chapter, you can contact me on my detail. Again I am telling, don't hesitate to contact. I'm there to solve your problem. Any kind of problem I can solve here. Thank you very much.